Welcome children. Today we'll be discussing the part 4 of chapter biomolecules. This is chapter 9 of class 11 biology. So far we have discussed biomolecules like proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acid. Then we discussed the metabolic basis for living, dynamic state of body constituents, concept of metabolism. Today in this session we'll be discussing the living state and enzymes. So let us start our discussion with the living state. The biomolecules are present at concentrations characteristic of each of them. So suppose take the case of glucose. For example, the blood concentration of glucose in a normal healthy individual is 4.5 to 5 mm. But in hormone, the concentration of glucose would be in nanogram per ml. So in every part, or you can say in every constituent of our body, the characteristic concentration of a particular biomolecule is present. And the most important fact of the biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. That means in a healthy person, I am not talking about a person which is suffering from any disease or any infection or any abnormalities. But in a healthy person, the concentration of a particular biomolecule is constant. That's why the body is always in a steady state. But what does this fourth point tells? These biomolecules are in a metabolic flux. That means, let me explain you in Hindi. So, मेरे कहने का मतलब है कि बॉडी में चाहे ब्लड हो, हार्मोन हो या कोई फ्लूइड हो या फिर बॉडी का कोई पार्ट और एनी ऑर्गन, उसमें कोई भी बायोमोलिक्यूल का जो कंसेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है and that is in a particular concentration. That's why the body is in a steady state. लेकिन ये steady state में कैसे है? हम तो जैसे हम खाना खाते हैं, फिर excretion होता है, फिर blood circulation होता है. Then how it is in a steady state? So here the fourth point tells that the biomolecules are in a metabolic flux. इसका मतलब है हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, आई मीन जो केमिकल रिएक्शन या फिर फिजिकल प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसमें हमारे बायोमोलिक्यूल्स spontaneously and continuously they are released from one metabolic process and they are utilized in some other metabolic process. एक से रिलीज होते हैं तो दूसरे में यूटिलाइज हो जाते हैं. So that's why the body is in a steady state. But the steady state is a non-equilibrium state. So why it is in non-equilibrium state? Living body में non-equilibrium state में क्यों है? क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़े हो, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, जब कोई सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम में रहता है, then only we can say that it is working. अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो वो वर्क नहीं कर सकता. The work done will be zero. And since we are living and our body is performing work, each and every part of the body, the organ of the body is doing some kind of work. Continuously the work is being done. That's why the steady state is because of the non-equilibrium state.
So why it is not in non-equilibrium state? Because the metabolic flux is there. The biomolecules are in a metabolic flux. That means एक metabolic process से रिलीज होते हैं, दूसरे में यूटिलाइज होते हैं, फिर वहां से रिलीज होते हैं, तीसरे में यूज होते हैं. So in this way it is a cyclic process. Okay. So the living organism work continuously because of this non-equilibrium state. Okay. So this is the reason, children, why a living organism can work continuously. Now, what are metabolites? Metabolites are the intermediates and products of metabolism. Metabolism आपको पता है, metabolism is the chemical reaction. So chemical reaction जब होता है तो उसमें कुछ मान लो क्रेब्स साइकिल की बात हम करेंगे, क्रेब्स साइकिल या फिर ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे. तो उसमें क्या होता है, इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, उसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं. और जैसे मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूंगी तो उसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. लेकिन ये जो है ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, इट इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, और उस स्टेप में काफी सारे इंटरमीडिएट बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, उसमें काफी सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं. ठीक है, तो उसको कहा जाता है मेटाबोलाइट्स. सो ये मेटाबोलाइट आइदर प्रोडक्ट हो सकते हैं या फिर कोई केमिकल पाथवे का इंटरमीडिएट हो सकते हैं. एंड the metabolites are always restricted to the small molecules. Okay, not the macromolecules like protein, lipid, carbohydrate. इसको हम मेटाबोलाइट नहीं बोलेंगे. मेटाबोलाइट means your small molecules like amino acid, the monomers, amino acid, fatty acid. So these are the metabolites. Then these metabolites are of two types: primary metabolite, secondary metabolite. So what are primary metabolites? Primary metabolites are those micromolecules or biomolecules which are directly involved in the normal growth, development and reproduction. So primary metabolites में आपका है carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid, which are the small molecules of carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid, which can directly participate in normal growth, development and reproduction. So the primary metabolite can be macromolecule, okay, but they are always made up of micromolecules. So whenever any process is taking place, the whole carbohydrate is not participating in the process. Ultimately, the monomers of these macromolecules are participating in the metabolic activities. Then what about the secondary metabolites? Secondary metabolites are those molecules, biomolecules, which are not directly involved in the process of normal growth, development and reproduction, but they have many importance in the ecological function. Like the secondary metabolite includes mycotoxins, antibiotics, resins, gums. Okay, so children, these two types of metabolites are very, very important. Often the difference between primary metabolites and secondary metabolite is asked in the exam, and sometimes only the secondary metabolite itself comes as 2 marks question. So this is the classification of plant metabolites, that is primary metabolites, secondary metabolites. The primary metabolites may be carbohydrate, lipid, proteins, nucleic acid, like which consist of amino acid, fatty acid, glycerol, then nucleotides. So these are all primary metabolites which are directly involved in the growth and other processes of the plant body. Then what are secondary metabolites? Secondary metabolites are the alkaloids, phenolics, sterols, steroids, essential oils, resin, gum, tannin, lignin. So these materials, or you can say these biomolecules, are used for defense purpose.
And there are certain materials or certain secondary metabolites whose particular specific function is not yet known. Okay, so this is the difference between, these are the differences between primary metabolites and secondary metabolites. So here something more about the metabolites, that is primary and secondary metabolites. I have already discussed what are primary metabolites. I am not repeating that. Now secondary metabolites, in it is not found in all plants, but the primary metabolite always found in all kinds of plants. It is found in every kind of plants like herbs, shrubs, it may be your bryophyte, pteridophyte, anything. Okay. But the secondary metabolites are present in only some specific type of plant groups. And previously it was thought to be waste products, but later on it was proved that, it was observed that these biomolecules are having various functions in the plant. So what are these functions? They respond to the environment. They defend the plant against the herbivore, pathogens, competitors. They protect the plant from damaging radiation from the sunlight. So mainly they play very important role in defense mechanism of the plant. So these are the some of the examples of secondary metabolites. Uh, there are different groups of secondary metabolites like pigments, includes carotenoid, anthocyanin. Then alkaloids includes morphine, codeine. Terpenoids includes monoterpene, diterpenes, etc. Essential oils, lemongrass oil. Then toxins, it includes abrine and ricin. Then lectins includes concavalin A. Then drugs, vinblastine, curcumin, etc. Then polymeric substances like rubber, gum and cellulose. So these are some of the examples. You may or may not remember all the metabolites, but you have to remember some of the metabolites. Now we'll discuss the most important part of this chapter, that is enzymes. What are enzymes? Before discussing about the enzymes, let me tell you what is an enzyme. Enzyme, in simple word, it is defined as the biocatalyst. तो बायोकैटलिस्ट क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैटलिस्ट क्या होता है. कैटलिस्ट एक केमिकल होता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर देता है, बट खुद में कोई चेंज नहीं होता. दैट मीन्स द कैटलिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस which accelerates the rate of reaction without undergoing any change in itself. बट ये कैटलिस्ट जब लिविंग सिस्टम में होता है, then that is called enzyme. So they are biocatalysts. So enzymes are biocatalysts. And what is the nature of enzymes? Enzymes are protein. So remember children, all enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. So you know that proteins may be structural proteins, protein may be functional protein, protein may be carrier protein, protein may be hormone also. But enzymes, all kind of enzymes are protein in nature. This is very, very important. Sometimes you are asked to justify the statement that all enzymes are protein, but all proteins are not enzyme. Now, without these enzymes, the what will happen in our body? In our body, the biochemical reactions are taking place. So, if the enzymes will not be there, then the chemical reaction in our body will occur too slowly for cells to function. Then what will happen? We cannot do so much of work, and all this process, suppose say circulation of blood. Okay, blood is circulating and that carries the various substances from one part of the body to other part. Then suppose say we are taking the food and
for digestion of food we require enzyme. So if enzyme will not be there, then the food which is digested in 4 hours or 2 hours, that may take few days to be digested. So that means you can imagine how slow would be the process, chemical process in absence of enzymes. So whatever chemical reaction are taking place in our body has its own specific enzyme. The enzyme which catalyzes the process of digestion cannot catalyze any other function in the body. Suppose say a protein digesting enzyme is there, then that protein digesting enzyme cannot digest the carbohydrate. It cannot digest the lipid. So they are very specific in their nature. And most of the enzymes are globular proteins, and but a few, here is the exception. The RNA sometimes act as the enzyme. The RNA is not protein, but sometimes it acts as enzyme. In class 12 you will discuss how the RNA acts as enzyme. Okay, so enzymes undergo all the reactions of proteins, and it can be denatured by heat, pH, etc. So what does it mean? It means protein, denaturation of protein means protein is a polymer. It consists of many amino acids. So when more heat is given, then the peptide bond present in between the amino acid will break down and the protein will get denatured. Okay, or if the protein is in the quaternary structure or tertiary structure or secondary structure, then the bond that is responsible for this structure will break down and the protein will get denatured and it will become functionless. Excuse me. So the enzyme activity depends upon various factors like temperature and pH. So these are some of the characteristics of enzymes. The enzymes speed of a chemical reaction. Already I have told you they accelerate the rate of reaction without undergoing any change in itself. Enzymes are required in minute amount. In very small amount they can catalyze the chemical reaction. They are highly specific in their action. I have already told you that the enzymes are very specific to catalyze the reaction, and the enzymes are affected by temperature. They are also affected by the pH. Some catalyzes, some of the enzymes catalyze reversible reaction. You know that chemical reaction can be reversible or irreversible. But some enzymes can also catalyze the reversible reaction. Okay, and there are certain enzymes which requires coenzymes. I'll tell you what is coenzyme at the, that is towards after discussing the enzyme action and other classification of the enzyme. Then the enzymes are inhibited by inhibitor. There are certain inhibitors which will inhibit the action of enzyme. In presence of such inhibitors, the enzyme will not function. It cannot catalyze the chemical reaction. Now, what is the difference between enzymes and inorganic catalysts? You know that enzymes are protein in nature. So, enzyme is a organic compound. It is a organic in nature. So, what is the difference? How it is different from inorganic catalyst? The enzymes are protein with high molar mass. But inorganic catalysts can be simple ions or molecules with low molar mass. Enzymes catalyze biological reaction, and the inorganic catalysts are used for catalyzing the non-biological reaction. And enzymes are highly specific in nature
but the inorganic catalysts do not show specificity in their nature. Their enzymes are very efficient in catalyzing the chemical reaction, but the efficiency of the inorganic catalyst is not that much high as that of the enzymes. The efficiency of enzyme is greatly affected by change in temperature or pH, but the inorganic catalyst efficiency is, it also changes, but not too much affected by change in temperature or pH. The action of enzyme is explained by lock and key type mechanism, then induced field mechanism, but such mechanisms are not there because there is no specificity. Okay, so this cannot be explained by any mechanism that explains the enzyme action. Now, the most important difference between inorganic catalyst and enzyme. I have already told you, but here some temperatures are given. That's how the enzyme becomes denatured. The catalytic power is lost by the enzyme. So here I will be discussing. Inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure, while enzymes get damaged at high temperature. I have already told you that above 40 degree or 50 degree the enzyme gets denatured. The bond present between the amino acids breaks down and the enzyme gets damaged, and that becomes non-functional. But the enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperature like hot vent and sulfur springs are stable and retain their catalytic power even at high temperature. So these are the exceptional. These are exceptional protein which are stable even at very high temperature and also in freezing temperature. Okay, so the thermal stability is an important quality of such enzymes. I mean those enzymes which are very stable. Okay, so they are found only in thermophilic organisms. Thermophilic organism means they can survive at extreme temperature condition like freezing temperature or very hot temperature. Now, these chemical compounds, when we are talking about the enzyme and it catalyzes the reaction, then we should know what type of changes takes place in the chemical compound during a reaction. During a reaction, two types of changes takes place. One is physical change, which refers to a change in shape without breaking of the bond. You know that the chemical compounds are formed by certain kinds of bond. So when in a process there is no effect on bond or there is no breaking or formation of bond, then that is called physical change. And sometimes there is also physical process, you have already read in your lower classes that water is converted into ice, ice is again converted into water, then water can be converted into vapor. So these are all physical processes. Okay, so there are two types of physical process in which the in both the cases the bonds are not affected by any process. By any of these process, physical process, there will be no change in the bond formation or breaking down of the bond. Then what is another type of change is chemical change or chemical reaction, during which the bonds are broken or new bonds are formed. So here I have given you one example. Here you can see that barium hydroxide and sulfuric acid reacted here to form barium sulfate and water. Okay, so it is an inorganic chemical reaction because here there is no carbon hydrogen skeleton is present in any of the compound. So this is one inorganic compound, this is another inorganic compound, and they react with each other. As a result, the bond between barium and hydroxyl group, that is OH group, is broken down, and
it combines, this OH combines with hydrogen to form H2O, whereas the bond between H2SO4 is broken down and SO4 reacts with barium to form barium sulfate. So this is one of the example. So in this way you can cite many examples. Now we should know what is the rate of a physical or chemical process, because we know that enzyme increases the rate of reaction. So we should know what is the rate of a physical or chemical process means. Rate of a physical or chemical process refers to the amount of product formed per unit time. कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है एक रिएक्टेंट से. यू नो व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नो नीड टू टेल यू. सो एक केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक है रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. तो कितने टाइम में आपका जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसका उसको कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, तो ये जो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, this is always influenced by the temperature. ओके, टेम्परेचर के द्वारा ये हमेशा रेगुलेट होता है. और there is a general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degree change in either direction. आपको थंब रूल आपको पता है, ये जो केमिकल रिएक्शन डबल होता है या फिर हाफ होता है जब 10 डिग्री चेंज होता है टेम्परेचर में. अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है. अगर 10 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द जनरल रूल ऑफ थंब. देन जब कोई रिएक्शन कैटलाइज होता है बाय एंजाइम्स या फिर कोई कैटलिस्ट से, तब क्या होता है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है, दैट बिकम्स हायर देन ऑन कैटलाइज्ड वन. जिसमें कि एंजाइम नहीं होता या फिर कोई कैटलिस्ट नहीं होता, उस केमिकल रिएक्शन से काफी जल्दी आपका जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो this is all about your rate of a chemical reaction. Now we'll discuss about the enzyme, because the enzyme is the catalyst in the living system and the enzymes are protein in nature. So here we are talking about the metabolic process in our body, the rate of reaction, and now we'll discuss how the enzyme catalyzes a chemical reaction. But before that, we should know a little bit about the enzyme structure. Enzymes have either secondary or tertiary structure. You have already studied what is tertiary structure and secondary structure of protein. So the enzymes are always either in secondary structure or tertiary structure. And the protein chain in the enzyme, because you know that enzymes are protein in nature, so the protein chain in the enzyme are folded upon itself to form a pocket like structure. So here in this picture you can see this is the protein, and this protein, it has been folded upon itself to form a pocket like structure. So here a pocket like structure is formed and that is called active site. And what is the function of this active site? The function of this active site is to hold the substrate. So the active site is very specific for a particular substrate. Substrate means reactant. So reactant will fit to this pocket of the enzyme, and that pocket is nothing but the active site of the enzyme. Then the substrate will be converted into product. And this conversion is, the rate of conversion is increased to a greater extent by this enzyme. Okay. Now this substrate, here you can see this is the chemical structure. This is the enzyme. Here it forms a pocket like structure where the substrate, this is the substrate. Okay. So this is active site, and to this active site the substrate fits. Okay. Now
I will discuss what is enzyme action, how the enzyme works. So during the metabolic process or chemical reaction, what happens? The first of all, we should know what is substrate and what is product. Substrate are the reactants, which is always on the left side of the arrow. Okay, so the substrate or the reactants are converted into the product. Okay, but during this enzymatic reaction, enzymatic process, suppose this is a chemical reaction where there is a substrate which has to be converted into product. Then in a catalyzed enzyme catalyzed reaction, the enzyme substrate react with each other. That means the substrate feeds to the active site of the enzyme to form enzyme substrate complex. Okay. Then the enzyme induces certain change in the substrate. Then the substrate is converted into product. And once the product is formed, the enzyme is separated from the product. So here you can see that the enzyme is not undergoing any change in itself, but the substrate is converted into product. So here is the diagram. You can see the enzyme is there. It has the active site. The active site, to this active site the substrate feeds. Then here it forms the enzyme substrate complex. Then after the formation of the product, so here the bond has been broken down. The substrate is broken down to form the product and the enzyme gets separated, and now this enzyme is ready to catalyze another chemical reaction. Okay, so here is the description of for this process whatever I discussed there. So here another thing I will tell you. So this is a transition state. The enzyme substrate complex formation is a transition state. That means it is not a stable state. So at any time they may separate. So it is a transition state. You have to remember this, which only helps the substrate to be converted into the product. Now, how do enzyme catalyzes a chemical reaction? So here you can see that there is a graph. On the x-axis, the progression of reaction is shown, and on the y-axis, the potential energy is shown. Now, potential energy means the rate of reaction. That means फॉर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ एनर्जी, देखो आपका रिएक्टेंट है या फिर सबस्ट्रेट है, उसको वो जब एक्टिवेट होगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसका बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तभी वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है. तो उसके लिए काफी एनर्जी की जरूरत होती है. तो इस ग्राफ में हम दिखा रहे हैं आपको, जैसे पहले आपका इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम नहीं था तब यहाँ एक केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ. तो वो केमिकल रिएक्शन जो है उसके लिए कितना एनर्जी की जरूरत होती थी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड for the substrate to be converted into product is called activation energy. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लो यहाँ आपका ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को कितना एनर्जी की जरूरत है जब एंजाइम नहीं होता, लेकिन जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तब एक्टिवेशन एनर्जी कितना कम एनर्जी में आपका सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो हाउ द एंजाइम कैटलाइजेस द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैसे कैटलाइज करता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. पहले जितना एनर्जी सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने में लगता था उससे काफी कम एनर्जी की जरूरत होती है जब ये एंजाइम कैटलाइज्ड हो जाता है. ओके, सो हियर इज वन एग्जांपल. सो हियर देखो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिस इज यहाँ आप देखो यहाँ पर एनर्जी दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्टेंट है जो जिसको कि H2CO3. ओके,
H2CO3 में कन्वर्ट होना है। लेकिन इसके लिए हमको क्या है, यहाँ पर हम दो रिएक्शन दिखा रहे हैं, एक है आपका विदाउट एंजाइम, एक है विथ एंजाइम। विदाउट एंजाइम आप देख सकते हैं ये रेड कलर जो पिक है या कर्व है वो दिखाता है कि आपका कितना एनर्जी जरूरत है इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो उसके लिए कितना कम एनर्जी की जरूरत होती है। सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है एंजाइम के प्रेजेंस में काफी कम हो जाता है। ओके, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन। So in how the enzyme catalyzes, I have already discussed it. So here what happens when the substrate is there and it has to convert into the product, the substrate first binds to the active site of the specific enzyme और वो उस एक्टिव साइट में अच्छी तरह फिट हो जाता है। जैसे एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होता है उसी तरह आपका एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। ठीक है, तो जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है उसके बाद क्या होता है एंजाइम में थोड़ा सा शेप चेंज होता है जिसके वजह से सबस्ट्रेट और अच्छे से बाइंड हो जाता है। जैसे हम की को ताले में घुसा के जब घुमाते हैं तो उसका थोड़ा सा उसे अंदर जो होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, उसके बाद वो टाइटली फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम की से हम ताले को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर एक्टिव साइट अभी पूरा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है सबस्ट्रेट का। अभी जो सबस्ट्रेट का इधर बॉन्ड केमिकल बॉन्ड ब्रेक होना है तो उसका केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आपका एक न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। लेकिन ये भी स्टेबल नहीं होता और प्रोडक्ट एंजाइम से सेपरेट हो जाता है। ये देखिए आपका कैटालिटिक साइकिल आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये है आपका जो है फर्स्ट डायग्राम है एंजाइम, यहाँ पर सबस्ट्रेट किस तरह अटैच हो रहा है एक्टिव साइट में। धीरे धीरे आप देख सकते हैं एंजाइम का बहुत क्लोज आ जाता है एक्टिव साइट का जो सबस्ट्रेट है और टाइटली बाइंड हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट का ये जो बॉन्ड था ब्रेक हो चुका है। सो इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट और यहाँ से क्या रिलीज हुआ है आपका बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वाटर रिलीज हो गया है और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर हमने लिया था आपका सपोज से सुक्रोज लिया था, यहाँ पर सुक्रोज लिया था तो सुक्रोज का बॉन्ड ब्रेक डाउन होके ये क्या हो गया आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो नाउ द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द प्रोडक्ट। अभी एंजाइम से ये दोनों प्रोडक्ट सेपरेट हो जाते हैं और एंजाइम भी सेपरेट हो जाता है और एंजाइम तैयार हो जाता है दूसरा केमिकल रिएक्शन को, सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। मैंने जैसे बताया था कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच कैटलाइजेस द एंजाइम एक्टिविटी। सो दीज फैक्टर्स आर टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहता है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाए तो आपका जो एंजाइम होता है एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसका जो बॉन्ड होता है प्रोटीन का बॉन्ड एंजाइम में वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो द टेम्परेचर हैज बिग इन्फ्लुएंस, आई हैव अंडरलाइंड दिस। सो जब मोर हीट होता है, जब मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड एंजाइम इज देयर, एंजाइम का एक्शन किस तरह बढ़ता है आप देखो। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम का एक्शन भी बढ़ता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बट अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके आगे जाकर वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं यू आर गेटिंग ए कर्व लाइक दिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं when there is increase in temperature the kinetic energy increases and enzyme का एक्टिविटी इंक्रीज होता है बट इट इज अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद अगर और ज्यादा टेम्परेचर होता है तो धीरे धीरे एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाता है क्योंकि एंजाइम धीरे धीरे डीनेचर हो जाता है।
उसके बाद हम देखेंगे पीएच। हर एंजाइम के लिए, हर केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच होता है। सो एक मान लो एक केमिकल रिएक्शन को एसिडिक पीएच में लाइक एट पीएच 6 में होना चाहिए, 6 पीएच में होना चाहिए, लेकिन 6 में सबसे ज्यादा उसका एक्टिविटी रहेगा एंजाइम का। लेकिन 6 से अगर कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि एंजाइम कंसेंट्रेशन, अगर आप देख सकते हैं एंजाइम अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन ये आप देख सकते हैं जब अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है तो एंजाइम किसको कैटेलाइज करेगा? सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट। अगर एंजाइम का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो केमिकल का रिएक्शन का जो रेट होता है वो इंक्रीज होगा, लेकिन जब सबस्ट्रेट लिमिटेड होगा तब क्या होगा, ये स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, इट विल बी स्टेशनरी स्टेट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगा। उस तरह सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है तो आपका केमिकल रिएक्शन जो उसका रेट होता है इंक्रीज होता है, बट हाउ फार इट विल इंक्रीज, जब तक सफिशिएंट एंजाइम है। जब सारे एंजाइम यूज हो जाएंगे उसके बाद ये आपका स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगा और कोई रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पूरा स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप दीज फैक्टर्स आर क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू। नाउ I have told you that the enzyme action can be inhibited by the inhibitors. There are certain chemical compounds which can inhibit the enzyme action, which prevents the enzyme to catalyze the chemical reaction. So here I have given one example, and this inhibition is of two types, but in your syllabus only competitive inhibitor is there. So here you can see that I will discuss both the type of inhibition. आप यहाँ देख सकते हैं ये एक एंजाइम है और इस एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ये है, पिंक कलर का है। लेकिन यहाँ पर अगर इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर कौन होता है? इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसका स्ट्रक्चर लगभग सबस्ट्रेट के एक जैसा होता है। तब क्या होता है, ये एंजाइम का अगर मान लो इनहिबिटर ज्यादा क्वांटिटी में है, सबस्ट्रेट थोड़ा कम है, तो इनहिबिटर जाकर एक्टिव साइट में बाइंड हो जाता है। जब ये एक्टिव साइट में बाइंड हो जाता है तो सबस्ट्रेट के लिए कोई एक्टिव साइट नहीं रहता बाइंड होने के लिए। सो इन दिस वे द एंजाइम is inhibited, the function of enzyme is inhibited to bind to the substrate and catalyze the reaction. तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि सबस्ट्रेट एंजाइम में बाइंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक एक्टिव साइट के लिए दोनों कंपीट कर रहे हैं। अगर इनहिबिटर ज्यादा है, पहले बाइंड हो गया तो सबस्ट्रेट रिएक्ट नहीं कर पाएगा, सबस्ट्रेट का कोई कन्वर्सन नहीं होगा प्रोडक्ट में। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनहिबिटर का सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजाइम का एक एक्टिव साइट होता है और दूसरे साइट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब कोई इनहिबिटर, कुछ इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव साइट के लिए कंपीट नहीं करते सबस्ट्रेट के साथ, रेदर व्हाट दे विल डू, वो क्या करेंगे, किसी दूसरे साइट में एंजाइम का बाइंड हो जाएंगे और वहां पर बाइंड होने के बाद एंजाइम का शेप को ऐसे चेंज कर देंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कर पाएगा, तो एंजाइम एक्शन नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट को कंपीट करना नहीं पड़ रहा है, रेदर यहाँ क्या हो रहा है, किसी दूसरे साइट में बाइंड हो रहा है इनहिबिटर और इस एंजाइम का शेप को चेंज कर देता है ताकि सबस्ट्रेट बाइंड ना हो पाए। सो आई थिंक द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज क्लियर टू यू। सो फिर से मैं आपका सिलेबस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसको पहले बता देती हूँ फिर से। एंजाइम में एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट में जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है तभी एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज होता है। लेकिन जब कोई इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर यानी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसका
सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तब ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए compete करता है और एक्टिव साइट में आकर बाइंड हो जाता है। अभी कोई एक्टिव साइट एंजाइम में बचता नहीं है सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए, तो आपका जो केमिकल रिएक्शन होना था वो नहीं हो पाता। ये एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल दिया हुआ है। तो मैंने जैसे बताया कि जो इनहिबिटर होता है उसका स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है सक्सिनेट, ओके, ये है सक्सिनेट और ये है मालोनेट, ठीक है, एंड दिस इज एंजाइम। ये एंजाइम में, एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनेट है। तो अगर सक्सिनेट बाइंड होता है एंजाइम में, तब क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, फिर आपका जो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमारेट में, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन आप यहां देख सकते हैं मालोनेट, मालोनेट का स्ट्रक्चर इसके साथ लगभग मिल जाता है एक्सेप्ट CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप को छोड़ के बाकी जो स्ट्रक्चर है उसका इसके साथ मिल जाता है, जिसके वजह से मालोनेट एक्ट एज इनहिबिटर फॉर दिस एंजाइम। तो जब आपका मालोनेट अगर होगा ज्यादा, सक्सिनेट भी है मालोनेट भी है, तब क्या होगा, मालोनेट ज्यादा क्वांटिटी में है तो मालोनेट एंजाइम में बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो जाने से क्या होगा, अभी सक्सिनेट यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाएगा। तो जब मालोनेट के लिए तो ये एंजाइम नहीं बना है, जैसे हम गलत ताले में एक गलत चाबी लगाएंगे तो वो ताले को हम खोल नहीं पाएंगे। उसी तरह अगर मालोनेट अगर एक्टिव साइट में आकर जुड़ जाता है तो दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा और कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। So this example is very very important, children, from examination point of view. So keep this in your mind, and this is along with structure I have given here the example. Now the classification and nomenclature of the enzymes. In most cases enzymes names end in ASE, like urease, amylase, protease, carbohydratase, lipase. So ASE is present, these three letters are present at the end of the enzyme. The common name for a hydrolase is derived from the substrate, like जैसे urea, जैसे urease is the enzyme to catalyze the reaction, that is breakdown of the urea. Suppose यूरिया को ब्रेकडाउन के लिए यूरिएज एंजाइम की जरूरत है, तो उसका सबस्ट्रेट क्या बना, यूरिया इज द सबस्ट्रेट। तो अभी एंजाइम का नाम क्या होगा, यूरिया यूरिएज। ए को रिमूव कर देना है और उसको रिप्लेस करना है एएससी के साथ, सो दैट सबस्ट्रेट के नाम के साथ अगर एएससी जुड़ जाए तो वो हो जाता है एंजाइम का नाम। सिमिलरली लैक्टोज, लैक्टोज का OSE अगर रिप्लेस हो जाएगा ASC से, देन दैट विल बी द एंजाइम catalyzing the breakdown of lactose. So similarly, the other enzymes are also named by the type of reaction they are catalyzing or the substrate used in the chemical reaction. Okay. Now the enzymes are their nomenclature was given by the nomenclature committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology, and it adopted the rules, this rule whichever I said you, in 1992 for the systematic classification and designation of enzymes based on reaction specificity. So basing on the type of chemical reaction they are catalyzing, the enzymes are of 6 types. They are grouped into 6 categories: oxidoreductase, transferase, hydrolases, lysases, isomerases, ligases. Now we'll discuss each type of reaction, each type of enzymes along with their function.
The first one is oxidoreductase. So the very name indicates that this type of enzyme catalyzes oxidation and reduction reaction. Okay. So here suppose say there are two reactants, that is A and B. A is the reductant, that means electron donor, and B is the oxidant, that means electron acceptor. So A will give electron and B will accept electron. So here A is reductant, that is electron donor, as I said. So here both reduction and oxidation, both process are taking place. Okay. So such type of reaction when catalyzed by an enzyme, that enzyme is called oxidoreductase enzyme. Okay. Or you can say the redox reactions are catalyzed by the oxidoreductase enzyme. So here is the example, like inorganic phosphate plus glyceraldehyde 3-phosphate plus NAD. ये जब तीनों रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या फॉर्मेशन होता है, NADH, H प्लस एंड बाइफॉस्फोग्लिसरेट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है. जैसे NAD यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, NAD रिड्यूस हुआ है और ग्लिसरल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ है. So here both oxidation and reduction takes place by donating electron and by accepting electron by the two reactants. So it is redox reaction, and such type of chemical reaction are catalyzed by a group of enzymes called oxidoreductase. The next group of enzyme is transferase. This catalyzes the transfer of a group from one to another substrate. For example, the aminotransferases, methyl transferases, glucosyl transferases. That means यहाँ जिस तरह का ग्रुप को एंजाइम ट्रांसफर कर रहा है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में या फिर एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में, तो उसके हिसाब से उसका नेमिंग किया गया है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल, ग्लूकोज प्लस एटीपी. यहाँ दो रिएक्टेंट है, तो एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करके ग्लूकोज में बाइंड कर देता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी, ये डाइफॉस्फेट हो गया क्योंकि यहाँ से एक फॉस्फेट चला गया, तो फॉस्फेट ट्रांसफर हो गया ग्लूकोज में. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द ग्लूकोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट और यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को, और जब फॉस्फेट रिलीज होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो इसीलिए उसको काइनेज मींस इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू एनर्जी. सो ग्लूकोकाइनेज इज द एंजाइम. It is a type of transferase. Then third group of enzyme is the hydrolase. So this type of enzyme catalyze the hydrolytic splitting of ester, glycoside, amide or any kind of bond which releases water. Okay. So here you can see that which requires water. It requires water. So glucose 6 phosphate, it requires water to break down this bond, that means to separate the phosphate. So here the enzyme that is required for this process is a type of hydrolase, and here the glucose 6 phosphate is the substrate. So the name of the enzyme is glucose 6 phosphatase, which in presence of water removes the or breaks the bond between glucose and phosphate is released. So this is the type of hydrolase enzyme, that is your glucose 6 phosphatase, which breaks down the bond between the glucose and phosphate in presence of water. So always it is this lysis or breakdown takes place in presence of water. And the fourth group of enzyme is lyases. It catalyzes lysis or breakdown of a substrate, generating double bond in a non-hydrolytic, non-oxidative elimination. So here water is not required. It will break down, but it will not
in presence, it will not take place in presence of water. So here you can see this is pyruvate. Okay. So here you can see that how the pyruvate is converted into acetaldehyde with the removal of carboxyl group. Okay. COO is removed and it becomes acetaldehyde and this forms the carbon dioxide. Okay. So here you can see that this bond has been broken down. This bond has been broken down but in absence of water. So when this bond is removed or this particular group is removed, this may create double bond. But it is not mandatory that always it will create double bond. But here you can see that in this example I have given, in one of the reactant no double bond is formed, whereas in carbon dioxide double bond is formed. The next one is isomerization. It catalyzes isomerization reaction. Isomerization means you know that same structure but different, that is your same chemical formula but different structure. So here you can see the chemical formula is same but the structure is different. So here you can see that NH3 is present on the left, here NH3 present on the right. So this is only the difference. Otherwise, if you write the formula for both, it is same. So it is L-alanine and D-alanine. In chemistry, you will read about details about the geometrical isomerism, optical isomerism. So there are different types of isomerization. But for this session, I can only tell you that the isomers are those chemical compounds which are having similar chemical formula but different structure. So such type of conversion from one structural, one structure to other structure is called isomerization, and this isomerization is catalyzed by a group of enzymes that is called isomerase. Then the last type group of enzyme is ligases. Ligase means joining. So it always joins two substrate and it always requires energy. So here you can see that this is glutamate and this glutamate combines with ATP, and from ATP the phosphate and ammonia will be attached to the glutamate and it will form glutamine. You know that this is amine group. The amine group will be attached to this, for which energy will be released and that energy will be utilized for this conversion. So here you can see that there will be the joining of NH4 and glutamate to form glutamine. So here the enzyme is ligase. So what is the name of that ligase enzyme? Glutamine synthetase. Similarly, ligase enzymes are also used for the joining of the DNA fragments and RNA fragments. Now in enzymes, sometimes what happens? The enzymes cannot work or catalyze a reaction if there are certain factors are not there along with it, and such factors are called cofactors. That means the factors which are associated with the enzyme to catalyze a chemical reaction or which helps the enzyme to catalyze a chemical reaction are called cofactors. So here you can, before going to the details of cofactor, let me explain you the detailed structure of a enzyme. The enzyme has two parts. One is the protein part, that is called apoenzyme, and the helping part, the part that helps the enzyme or the protein part to bind with the substrate or catalyze the reaction, are called coenzymes. Okay, or the cofactors, which are usually the non-protein part. So here a complete enzyme can be formed when only the protein part of the enzyme combines with the coenzyme. Then the complete enzyme is formed and it can catalyze the chemical reaction. But in absence of coenzyme, the enzyme cannot work. So the protein part of the enzyme is called apoenzyme, and the complete enzyme that is formed along with the coenzyme, that is apoenzyme plus cofactor,
together form the holoenzyme. The holoenzyme can only catalyze the chemical reaction, not the apoenzyme. So here you can see the examples of cofactors. What can be the cofactors? So here I have already shown you this picture. So apoenzyme is inactive, but it requires cofactors and coenzymes for its reaction or for catalyzing the reaction. So what is the difference between cofactor, coenzyme? The cofactors and coenzyme both help the apoenzyme to catalyze the reaction. But the cofactors are non-protein component and coenzymes are organic cofactors. So these may be vitamins, this may be coenzyme A, okay? And what is holoenzyme? When this apoenzyme combines with cofactor or coenzyme, then it forms a complete enzyme or holoenzyme, and that is the active form of enzyme. Now, what are the different types of cofactors? Cofactors are of two types, essential ions and coenzymes. Essential ions are again of two types, activator ions and metal ions, like metalloenzymes, which are tightly bound to the apoenzyme or the protein part of the enzyme, and the activator ions are loosely bound to the apoenzyme. Coenzymes can, when they are bound loosely to the enzyme, they are called co-substrate, but when they are bound tightly, then they are called prosthetic group. So here the NAD, NADP, these are the prosthetic group. So again here structurally I have given what are the, you can see that in case of hemoglobin, okay, hemoglobin, iron is present. Then you can see that here magnesium is present in the chlorophyll. Then cofactor and enzyme, in between these two there are certain differences. Cofactors are non-protein, small, inorganic. They may be compounds or ions like magnesium, potassium, calcium, zinc, iron, copper, and bound within enzyme molecule. And coenzymes are also non-protein but organic molecules and bind temporarily or permanently to the enzyme near active site. Okay, it includes the prosthetic group, okay, like NAD, FAD, coenzyme A. So this is all about the enzyme and how the enzyme catalyzes the chemical reaction. And with this, the chapter biomolecule ends here. And I hope all the concepts are clear to you. And I tried my level best to make your doubts clear or concept clear related to biomolecules. So thank you very much for watching this video. Thank you.